हेलो एंड वेलकम टू IPM Careers। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। ये कंसेप्ट ऑब्वियसली परसेंटेजेस के चैप्टर में आपके काम में आएगा, एट द सेम टाइम ये आपके काम में आएगा इन द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल्सो आएगा इन द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, किस तरीके से आएगा थोड़ा सी बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि जो पूरा प्रॉफिट लॉस मार्कअप एंड डिस्काउंट का लॉजिक होता है वो क्या होता है, सो लॉजिक कुछ इस तरीके से होता है कि कॉस्ट प्राइस पे होता है मार्कअप, तो वो बन जाता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे मिलता है डिस्काउंट, तो वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। लेकिन हर चीज क्यों होती है? फॉर प्रॉफिट। ऑल द बिजनेस आर वर्किंग फॉर व्हाट? प्रॉफिट। सो फ्रॉम CP टू SP द जर्नी इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब ये भी अपने आप में एक सक्सेसिव परसेंटेज ही तो है, राइट? सो द फर्स्ट इनिशियल वाज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उस कॉस्ट प्राइस के लिए मार्क प्राइस वाज द फाइनल, फिर ये बन गया इनिशियल फॉर द सेलिंग प्राइस और द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस बिकम्स द फाइनल, ठीक है। तो दो बार चेंज हो रहा है। सो इसी के बेसिस पे हम लोग डिराइव करेंगे एक फॉर्मूला विच इज कैपिटल M माइनस D माइनस MD अपॉन 100 इज इक्वल्स टू P का फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट, मार्कअप एंड प्रॉफिट परसेंटेज के रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे M को ये कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे अपन लोग। यहाँ पे इस वाले M का मतलब है मार्कअप परसेंटेज, D का मतलब है डिस्काउंट परसेंटेज एंड P का मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज। दीज आर नॉट वैल्यूज, दीज आर परसेंटेजेस ऑफ द सेम थिंग। एंड नीडलेस टू टेल यू अगेन एंड अगेन दैट यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज वाज नथिंग बट मार्कअप विच हैपेंड ऑन द इनिशियल कॉस्ट प्राइस इनटू 100. Discount percent is nothing but the discount that happened on the initial of the discount, which is mark price, into 100. And obviously profit percentage is nothing but the profit that happens on the initial of cost price into 100. Okay, so we will discuss this particular formula with a very beautiful example. Okay, so I have a very close friend of mine. He works as a retailer as well as a wholesaler. Okay, so what he does, okay, whatever he buys is his cost price. Okay, now he sells it to the the generic retailers. Okay, so he's a wholesaler and he sells to the retailers. Okay, so the price that he sells to is becoming his selling price. Okay, but that is the cost price of the retailer. So the cost price of the wholesaler and the selling price of the wholesaler is the same as the cost price of the retailer, right? And the selling price of the retailer is the same as the cost price of the customer. Okay, so we will not discuss in such complicated way. I discuss a very simple example. Okay, let's say the wholesaler is a person who buys something for 100 rupees. He says that I will charge 20% of profit on it. Okay, and he will be selling it to the retailer. Okay, so in what language he will talk? He say that this 100 rupees is my investment, my cost price. So this much you have to give it to me for sure. And I also require 20% of the initial, which is 100. So what would be 20% of the initial? 20% of the initial being 100 would be 20 rupees. So he asked for an extra 20 rupees from the retailer, right? So now this 120 rupees becomes the cost price of the retailer. Now the retailer says that I will be charging
extra 50 rupees or 50% on whatever is my investment on this particular good. Okay. So what he will be saying that this 50% I will be charging on the 100 rupees. Not just that, he will also be charging on this 20 rupees. So 50% would also be charged on this 20 rupees. Okay. So how much that would be? This would be 50 and this would be 51 za, 52 za, or it would be 10 rupees. Okay. But if I have to just write it down, what would I write? I'd say that he would be saying, in what language he'll be talking to the customer, he would be saying, give me 100 rupees, that is my investment. ये मेरा investment है. Give me 20 rupees, that is also my investment. ये भी मेरा investment है. अब मुझे extra दो. Okay. So 50% of 100 would be 50. तो वो 50 rupees तो मांगेगा ही मांगेगा. At the same time, he will also ask for 20 rupees का 50%. तो अगर आप यहाँ पे जरा ध्यान से सुनो तो क्या हो रहा है, 100 रुपीज की चीज 100 रुपीज की तो बिक ही रही है. ठीक है. एक्स्ट्रा कितने की बिक रही है? 20 रुपीज, राइट, प्लस 50 रुपीज प्लस 20 into 50 upon 100 rupees. Okay. So this is what the overall value or overall percent increase. Okay. So overall percentage increase would be 20 plus 50 plus 20 into 50 upon 100. And that is how we can derive the formula. Okay. If in general terms, if this 20% is nothing but some A percentage, this 50% is nothing but some B percentage. So net value, net overall increase would be equal to A plus B plus A into B upon 100. Okay. So A plus B plus AB upon 100 would be the net overall percentage increase. Okay. And that, my friends, is the first formula that we can derive. Now, implementing the same formula here. Okay. So what is happening here? This 100 rupees is nothing but the cost price. Right. The first percentage change that happens is called the markup percentage. Right. So thereby it becomes mark price. The next percentage change that happens is called the discount percentage. And that net value is called the selling price. So from cost price to selling price, the whole journey is called the profit percentage. Okay. So if you see what is happening, अगर आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, so A is equivalent to M, बिल्कुल, तो यहाँ पे इसलिए मैंने M लिखा. Here D is equivalent to B, लेकिन यहाँ पे माइनस D है, so माइनस D लिखा. और जब मैंने प्लस A इंटू B करना था तो मैंने क्या किया, मैंने प्लस M इंटू माइनस D किया और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस का साइन और M इंटू D हो गया MD upon 100, and that is equals to the overall percentage change. So what is the overall percentage starting from the cost price till the selling price? Profit percentage. इसलिए overall की जगह लिखा मैंने P. So ये है पूरी कहानी. This is the first formula of successive percentage. ये फॉर्मूले में कुछ रूल्स है and they are that these are percentage values. A and B are the percentage values which comes with a sign. Okay, please note it down. A and B are the percentage values which comes with a sign. Here sign means what? Increase means plus, decrease means minus. Okay, profit means plus, loss means minus. Markup means plus, rebate means minus. Okay, tax means plus. Okay, depreciation means minus. Something like that. Okay, basically any kind of increase is a plus and decrease is minus. Okay, these are percentage values. Please remember this. What do you know percentage values? So 20%
percentage value is 20. Okay, so when I talk or say percentage value, I means 20. Okay, and when I say fractional value, when I say fraction value, the fraction value would be 20 upon 100, 1 upon 5, 0.2, and all of these. Okay, so these would be the fraction values and these would be the percentage values. We don't denote percentage values by, let's say, capital letters, and we denote fraction values by small letters. Okay, so if I need to interchange between them, what would I say? That R upon 100 is equals to small r. Okay, so this is the way to convert a percentage value to a fraction values. Okay, so this is the first session on the basis of which we discuss with you the first formula of successive percentage, and I am very sure ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपने बहुत ध्यान से नोट कर लिया, समझ लिया, दिमाग में बिठा लिया, तो आपके लिए 3 चैप्टर्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं. सक्सेसिव परसेंटेज, बेसिकली द चैप्टर ऑफ परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, मार्कअप एंड डिस्काउंट, एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट स्पेसिफिकली. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे. एट द सेम टाइम उसके डेरिवेशन के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, एंड ये फॉर्मूला अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाते तो कैसे करते. कहने की जरूरत नहीं है, 1/1 से लेकर 1/30 के जो पूरे फ्रैक्शंस हैं वो किस तरीके से काम में आएंगे वो भी आपके साथ डिस्कशंस में आएगा ही आएगा, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा उसकी यूजफुलनेस. राइट, सो दिस वुड बी द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद IPM Careers. थैंक यू.